ठीक है. So of course I am a Punjabi, most of you know that, right? तो हम लोग के घरों में ना दो ही सवाल पूछे जाते हैं हमेशा. Anybody here who is a Punjabi actually? Before I say anything else. Yes, yes. All are Punjabi here. All are. I am तो फिर हम मजाक कर सकते हैं. Not me, but all are Punjabi. हमारे घरों में ना दो ही सवाल पूछे जाते हैं. आज की खाना बनाया जाए तो पार कितना घटाया जाए. Yes. Right? And because somehow we Punjabis gain also a lot of weight. Yes. And obesity has always been a topic very close to my heart because my buas were very, very fat. They were always 120 kgs plus. Oh. So when I was very young, I used to be very scared of obesity because when they used to come to the house, वो सोफे पे नहीं बैठ पाते थे. उनके लिए बड़े सोफे या मंजा अरेंज करना पड़ता था. दो लोगों को पकड़ के चलना पड़ता था. You can मतलब विजुअलाइज करके भी. हाँ, है ना? And very successful. And फिर of course मैं बहुत मोटी हो गई तो बिल्कुल हवाई निकल गई. भाई हो क्या रहा है? What is happening and what do I do about it? And that's how I came into functional medicine. So I realized that if you have to do one thing for your obese patient, just one thing, आपको पता है उस बंदी की लाइफस्टाइल ऐसी है, उसकी जिंदगी इतनी ऊपर नीचे चल रही है कि भाई ये करेगी क्या? We meet such patients where we don't know what we can tell them to do. Their life is already so turbulent. So if we are able to do one thing for that girl, for that lady, for that man who is wanting to lose weight, that has not to be diet. वो diet नहीं हो सकती. वो sleep है. And today I will share with you वो sleep क्यों है और sleep के होने से कैसे आप better diet follow करवा सकते हो अपने patient से, है ना? क्योंकि ये है जो हर कोई सो ही रहा है, सोना चाहता है. जितने घंटे सो रहा है उसमें हम कितना बेटर कर सकते हैं. एंड वेट ना अपने आप श्रिंक होने लगता है. एंड आई हैव सीन इट इन मेनी पीपल. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. ओके, कैन यू सी द प्रेजेंटेशन? No, ma'am. Yes. ठीक से दिख रही है? Yes, we can see. Perfect. Yes, ma'am. Yes. So basically, before मैम थोड़ा ऑडियो थोड़ा आप नजदीक से थोड़ा बोलना पड़ेगा लैपटॉप. Perfect. So now, sleep and obesity. कुछ की भी बात करें तो सवाल सबसे पहले पूछना जो है, that is why. Why is sleep connected to obesity? And then, how can we correct that sleep so that the patient loses weight? ये कॉन्सेप्ट है जो फंक्शनल मेडिसिन में हम हर डिजीज के लिए लगाते हैं. It could be obesity, it could be diabetes. So what we say is that root cause जो लाइन से नीचे है, we all know अगर पौधे की रूट्स अच्छी होंगी तो पौधा बेटर होगा, लीव्स हरी होंगी, फ्रूट बेटर होगा, राइट? सेम गोज फॉर आवर बॉडीज. अगर हमारी रूट्स अच्छी हैं, रूट्स मीन्स अगर हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं है, अगर हमें स्ट्रेस नहीं है या हम स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर रहे हैं, अगर जेनेटिक्स हमारे उतना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, डाइजेशन अगर हमारी पुअर नहीं है, लैक ऑफ स्लीप, ये ऑलमोस्ट हर बीमारी के रूट कॉज में आता है. ओनली ओबेसिटी के रूट कॉज में नहीं आता. इट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल क्रॉनिक डिजीजेस. ट्रॉमा, medications, toxins, infections, and genetically modified food. These root causes lead to all these diseases which you can see at the top, including cancer, heart disease, diabetes, chronic fatigue, IBS, constipation, depression, arthritis, insomnia, asthma, anxiety, thyroid. So generally what now at least I do is I tell them, okay, disease bata di, good. Let's dig a little deeper and let's ask, why are you suffering from these diseases?
And then this is what we check through different questionnaires and different testing. तो बेसिकली फंक्शनल मेडिसिन का जो वेब बनता है उसमें ये 8 पैरामीटर्स को हम बैलेंस करते हैं. तरीका वही है, एलोपैथी है, जस्ट देखने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है. So we first start with diet, nutrition, exercise and trauma. Then we come to oxidative stress and energy production. ATP कितने बन रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ कैसी है, बॉडी डिटॉक्स कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है जेनेटिकली या अदरवाइज, हार्मोनल एंड न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस है कि नहीं है, माइंड एंड स्पिरिट. वी फील दिस इज एज इंपॉर्टेंट एज आवर डाइट. स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस, हमारा पोस्चर ठीक होना, हमारी ब्रीदिंग के टाइम पे हम सही से बैठ रहे हैं कि नहीं, दैट क्रिएट्स अ ह्यूज रोल इन सेटिंग आवर रूट कॉजेज राइट. Gut imbalance and then immune and inflammatory imbalance. तो बेसिकली ये 8 पिलर जब हम सॉर्ट कर लेते हैं, दैट इज व्हेन वी फील कि बॉडी बैलेंस में हो गई है एंड मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज वी विल बी एबल टू हैंडल. अब कमिंग टू स्लीप एंड ओबेसिटी, ऐसे सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट, अगर मेरे पास कोई भी ओबीस पेशेंट आएगा एंड उसके मुझे पता चल गया स्लीप बहुत अच्छी नहीं है, जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली, आई विल डू सम टेस्ट टू नो व्हाट इज इट दैट आई नीड टू करेक्ट. नाउ इन टुडेस प्रेजेंटेशन आई विल ट्राई एंड नॉट टॉक अबाउट थिंग्स जो हम सबको पता ही है, ताकि छोटे टाइम में वी कैन डू अ लिटिल वैल्यू एनहांसमेंट. तो HSCRP एंड IL-6 ये 2 टेस्ट हैं जो मैं इन पेशेंट्स में जरूर करूंगी टू फिगर आउट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तो नहीं है. Because अगर chronic inflammation है तो patient will not be able to sleep properly, and when patient will not be able to sleep properly, patient will gain weight, and I will tell you why. Second, glucose and insulin imbalance. अगर रात को hypoglycemia हो रहा है, which is Dawn's phenomena, या insulin resistance है, तो disturbed sleep होगी, सुबह की शुगर हाई होगी. कहीं भी आपको अगर ये दिख रहा है तो यू नीड टू गो बैक एंड चेक स्लीप ठीक है कि नहीं है. अब हाउ डू यू चेक दैट? सबसे पहले आई विल टेक अ हिस्ट्री ऑफ स्नोरिंग, स्पेशली यंग गर्ल्स, यंग बॉयज में कोई भी स्नोरिंग की हिस्ट्री नहीं लेता है, वो अलग कमरे में सोते हैं जनरली आजकल, तो उनको पता नहीं होता. सो आई टेल देम गो बैक, स्लीप विद समबडी एंड लेट मी नो वेदर यू स्नोर एट नाइट और नॉट, because that is extremely important. जो भी स्नोर करेगा डॉन्स फिनोमेना होगा, फास्टिंग शुगर ज्यादा होगी, स्लीप डिस्टर्ब्ड पक्का होगी, and these people don't know that their sleep is disturbed. Actually when you will ask them sleep कैसी है, they'll say very good sleep but I sleep too much. Why too much? Because सुबह फ्रेश ही नहीं होते हैं, because रात को sleep REM and non-REM balance ही नहीं होता, so they're not able to sleep well. Another thing, hyperthyroidism, which means high T3, high T4, that can lead to insomnia. And पहले क्या होता था, hyperthyroidism के केसेस एटलीस्ट मेरी प्रैक्टिस में मुझे इतने नहीं आते थे, but now they are becoming more frequent post COVID. One test, but we should do it. Also, hyperthyroidism can lead to low quality sleep and excessive sleepiness, so we should rule that out also. And of course हम थोड़ा सा बिकॉज ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, तो रादर देन रिलाइंग टू मच ऑन TSH, वी फोकस मोर ऑन फ्री T3 एंड फ्री T4. व्हेन आई एम सेइंग दिस, व्हाट आई वांट टू से इज दैट हम चाहते हैं कि पेशेंट का फ्री T3 उसके रेंज के अपर 1/3 में हो और फ्री T4 रेंज के लोअर 1/3 में हो, राइट? अगर फ्री T4 रेंज के अपर 1/3 में है, दैट गिव्स मी एन क्लियर आइडिया दैट न्यूट्रिशन जो थायराइड को चाहिए टू कन्वर्ट फ्रॉम T4 टू T3 इज मिसिंग. So in that case, even if the TSH is slightly higher, I will not put the patient on Thyronorm. I will put the patient on a combination of iodine, L-tyrosine, selenium, zinc,
ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स जो कि हमको थायराइड पेशेंट के लिए चाहिए. And after 3 months, I will repeat free T4 and free T3 and TSH. And अगर तब I see कि free T4 lower quartile में आ गया है, free T3 upper में आ गया है, still TSH is high, that's when I will put Thyronorm. Second thing I will check during this phase before putting the patient on Thyronorm is their sleep and cortisol levels again. Because obviously hypothyroidism में भी patient weight gain से आएगा. स्लीप डिस्टर्ब इसके पीछे का रीजन होगा, बट बिकॉज वहां तक हम जाते ही नहीं है तो हम इनको हेल्प नहीं कर पाते हैं. अनदर थिंग विच आई विल चेक, अगर मुझे लग रहा है पेशेंट ओबीज है एंड स्लीप इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम देयर, आई विल वांट टू नो उसका प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन कितना है. प्रोजेस्टेरॉन ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो, यू नो इट मोर देन आई डू, डे 18 से 21 में करेंगे. ठीक है. एंड आई जनरली डू ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन आल्सो दैट टाइम, बिकॉज एक आइडिया सब लग गया है क्या है. लो प्रोजेस्टेरॉन इट विल कॉज डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग स्लीप, राइट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस अगर होगा, एंड आजकल पहले तो सिर्फ हम मेनोपॉजल वुमेन में देखते थे, बट आजकल आई सी दिस इन अ लॉट ऑफ पीसीओडी गर्ल्स, एंड उन गर्ल्स में ना स्लीप से नीचे एक और लेवल पे जाना पड़ता है, दैट इज हेवी मेटल्स. These girls generally either have heavy metal load very, very high, toxins from plastic and all very high, or these girls will have some food allergy, which will keep their body always inflamed. Now, last but very important thing with poor sleep will be vitamin D3. Low vitamin D3 can be the sole reason that your patient is not able to sleep well. And because of that, your patient is not losing weight. And because of that, they are in a vicious circle. Zinc, B6 and magnesium. So what I'm seeing these days is, see, I always tell when we were in medical school, most of us, we didn't even think about vitamin D as a regular thing which we all had to supplement, right? But now, especially post-COVID, we all know vitamin D often on supplementation chahiye rahega. Two more things which have been added to this list are magnesium and zinc. We can add these by adding some seeds and nuts and green vegetables in our diet, or we can use a supplement depending on what is it that the patient will conveniently be able to do. Means this is so basic, so simple, but so powerful. कि अगर हम सिर्फ ये 4-5 चीजें उनकी बैलेंस में कर लेते हैं, you will see the sleep starts improving and you will see they will start losing weight. अब क्यों होता है कि स्लीप वेट को इफेक्ट करती है? क्योंकि there are lot of chemical changes जो स्लीप के टाइम होते हैं which define our metabolism. And उसमें आप देखोगे जो मैंने पिक्चर डाली है, I am generally only talking about nutrition here. Because that's what I strongly believe is the starting point and the problem for all the chronic diseases we are suffering from, right? So magnesium, B6, B12, CoQ10, vitamin D, B3, zinc, omega-3, iron, and electrolyte balance, which is sodium, potassium balance, extremely important. Then comes lifestyle changes, and third is sleep deprivation because we are on internet and all. I will tell you what all we need to do for this, but हमारे लिए ये important क्यों है जो भी अभी तक हमने discuss किया? Because lot of girls and women who come to us with PCOD, infertility, insulin resistance, mood problems, poor sleep is a big reason. हम बोल के भेज देते हैं यार वेट कम करके आओ, उनको कोई नहीं बताता कि वेट जो है वो स्लीप की वजह से नहीं सही हो रहा है. And it leads to even mental health issues in some patients, right? अब now let's understand biochemically क्या होता है स्लीप से. मेलेटोनिन इफेक्ट होता है ईस्ट्रोजन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी से, एंड वी नो मेलेटोनिन इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू गेट इनटू स्लीप मोड. सेकेंड, हम जितना ब्लू लाइट जला के रखते हैं शाम को या रात को, all of that dips melatonin in our bodies, which means
मेलेटोनिन बहुत यंग एज में ही कम हो जाता है, बच्चे रात को ब्लू लाइट में पढ़ रहे हैं. मतलब आई फाइंड इट सो सरप्राइजिंग कि हम कितना एफर्ट कर रहे हैं अपनी तबीयत को खराब करने के लिए. ऑनेस्टली we used to have those bulbs before which were much better than the LED lights which we are using now, because blue light exposure बहुत ज्यादा है LED lights का. Then cortisol, हमारी जो sleep disturbed है, क्यों disturbed है? लोगों का इवनिंग कॉर्टिसोल बढ़ रहा है. अब इवनिंग जब कॉर्टिसोल बढ़ता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है एंड एब्डोमिनल फैट बढ़ता है. एंड जनरली आप देखोगे बहुत सारी आपके पास ऐसे पेशेंट्स आएंगे जो बोलेंगे व्हाट एवर वी डू, लोअर एब्डोमिनल पाउच नहीं जाती. So for these people we do 4 salivary cortisol tests throughout the day, 8 a.m., 12 p.m., 4 p.m. and 8 p.m. And we see how the cortisol graph grows. I did not get the time to put it here, but it has to be highest at 8, then at 12, then at 4, and then at 8. You will see in most of the obese people जहां sleep reason है, उनका सुबह का cortisol blunted होगा, 12 बजे को और लो होगा, एंड शाम को 4 बजे एंड 8 बजे पीक कर जाएगा दोबारा. And these are the girls, जब आप हिस्ट्री लोगे, they will say सुबह we feel very lethargic when we get up, we are slow. Post lunch तो हमें काम करने का मन करने लगता है. Right? I'm sure all of you can relate to some of the people in your practice who would say this. ना? Then very important, sleep जो है वो हमारे ग्रेलिन एंड लेप्टिन को रेगुलेट करती है, which means वो ग्रेलिन को बढ़ा देती है तो हंगर बढ़ाती है, और लेप्टिन को कम करती है मतलब सैटिस्फैक्शन कम करती है. तो हमें कभी भी ये फीलिंग ही नहीं आती कि पेट भर गया. आप जनरली बहुत सारी पीसीओडी गर्ल्स में तो ये पक्का देखोगे, एंड मेन में भी जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस है, देर से हमें इतनी भूख लगती है, ऐसे लगता है पता नहीं कोई मॉन्स्टर पेट में पीछे भाग रहा है. You know, if you give them time, this is what you hear, because this is how it happens. Now we have lot of studies which show that अगर 6 hours से कम हम सो रहे हैं या हमारी नींद अच्छी नहीं है, तो nurses health study clearly said that 55% increase in obesity only when you are not sleeping enough. क्वालिटी की तो बात ही नहीं हो रही. When you sleep less, ghrelin बढ़ता है, लेप्टिन कम होता है, हंगर बढ़ता है, क्रेविंग्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, सैटिस्फैक्शन होती ही नहीं है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली स्लीप एपनिया जो है 2 to 3x टाइम्स मोर होता है ओबीज लोगों में, and that worsens insulin resistance, that worsens sleep. And interestingly, the moment you will start working on sleep on your patients, इतने यंग लोगों की CPAP मशीन हम 6 weeks से 6 months में बंद कर चुके हैं कि it is not surprising. It is so much worth the while. अभी recently I had a patient 32 years old, मेहनत मुहनत करके पढ़ाई कर कर अब जाके सेट हुआ, एंड नींद नहीं ठीक आती थी, स्नोरिंग थी, सीपैप मशीन लग गई. Came to us, we did all these studies, worked on his insulin resistance. Fasting insulin from 64 came down to 9 in 6-7 weeks, and we got him off CPAP machine in 6-7 weeks. Now it's been 4 months, he's not using the CPAP machine. So it's so worthwhile, no, कि we work on that. So basically अगर हम देखें sleep, stress, sugar, sex, हार्मोन का लूप कैसे जाता है, chronic stress होगा तो poor sleep होगी, which will lead to insulin resistance, which will lead to fat storage, which will lead to high cortisol, and which will lead to low melatonin. So everything, and also disrupted sleep will lead to estrogen dominance, which will worsen PCOS and PMS. So one sleep can change quite a bit in our practice. So what is it that is very important that we should check when we are checking about sleep, other than what you guys check? आप लोग तो सब कुछ पूछते ही हो, बट मैं क्या पूछूंगी?
स्लीप की ड्यूरेशन कितनी है, कितने बजे बेड पे जाती हो, कितने बजे उठती हो. If you sleep later than 11 and if you get up later than 7, sleep is not right. Do you walk up at night? Do you get up to drink water or eat something at night? Do you snore at night? Do you watch screen before bedtime? 2 hours before bedtime, you should not be watching screen. Because again, it is blue light exposure, जो कि melatonin कम कर देता है, जो कि sleep की quality कम कर देता है. अब, what do I tell my patients? I tell them, watch your TV just when you reach home. But dinner के बाद walk करने जाओ. Walk करने के बाद जो भी आपको घर का काम करना है, सुबह के लिए कपड़े निकालने हैं, थोड़ी cleaning करनी है, don't do it in the morning. Do it post dinner. Or get into the habit of reading a book. Or sit with a cup of green tea or hot water. Or, just otherwise and chit chat with your family, play a game, right? But don't watch TV at least 2 hours before you are about to sleep. Now, coming to people who will say, हमें तो पढ़ना है, paper है, क्या करें, right? Then we have those blue blocking glasses. Yeah, must use that also. हमारे फोन में, हमारे सिस्टम्स में आजकल ब्लू ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर आ गए. जैसे अगर आपका एंड्रॉइड सिस्टम है या मैक में शायद फ्लक्स आता है, शाम के टाइम वो फ्लक्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है. आपको इतना ब्राइट स्क्रीन नहीं दिखता जितना अभी दिख रहा है, बट इट इज वर्थ द वाइल, राइट? यू आर एबल टू वर्क ऑल्सो एंड यू आर एबल टू sleep better and keep your hormones in check. Now, few other things which we can do. We can definitely do sleep quality index questionnaire. We can use rings like Aura, Gabbit. We can use sleep diary. Extremely important, extremely powerful. And young generation loves doing such stuff. And then cortisol awakening response. Now, ये बहुत ही important है. Unfortunately, I'm not able to do it in India. So we send a saliva test to the US lab. They check 4-time cortisol in saliva and the cortisol awakening response, which means उठने के बाद कैसे cortisol spike करता है. Now this is extremely powerful when we work on balancing hormones in women. और क्या क्या चेक करेंगे, I've already told you, but fasting insulin करना ही है. PP insulin नहीं भी हो रहा है, कोई बात नहीं. We will do sex hormone binding globulin. We will do cortisol. I told you low morning cortisol telling us sleep अच्छी नहीं होगी. HSCRP and estrogen dominance patterns, which I've already told you. We will skip this. Now I want to share 1 or 2 case studies with you because I know I've short up time. So this was a 28-year-old girl who came to me with irregular periods, BMI of 32. Only sleeping 6 hours or even less. Screen time till 11:30 p.m. देखना ही देखना है TV. What we did, we improved her sleep hygiene, which means I told him 2 hours पहले screen नहीं लगनी, नहीं तो आपको blocking glasses लगाने हैं, आपको deep breathing या योग निंद्रा करनी है 2 घंटे पहले, right? Then some other thoughts about how she can plan her evenings better. कोई stressful चीजें नहीं करनी. पता है इससे बात करके गुस्सा आएगा, तो 5 बजे से पहले वो कॉल निपटा देनी है, right? It really matters, right? Then adding magnesium and adaptogens. Adaptogens could be ashwagandha, rhodiola. They're extremely good. If you don't want to give any supplement, just give chamomile tea in the evening. Extremely powerful, very good taste, and it really helps. Nothing else we did, nothing else, no diet change, nothing. Her periods became normal and she lost 7 kgs in 3 months. Because her hook was there, right? Now this is a very, very phenomenal case. You would love this, and this is the last case I will present. 54-year-old female, son brought her to me. She had insomnia, panic attacks. She used to get up at 12, 2 at night and have bowls of makhana and ice creams and milk pudding and chocolates. She was on hypothyroid medicine for 25 plus years, epileptic, but no attacks in the last 15 years, pre-diabetic, high cholesterol.
Now, she had tried everything and she came from very, very far off. What did I do? I worked on her thyroid. I worked on her liver function test. I worked on her sleep, opened her detox pathways. This is what I checked for her. Her fasting insulin came back from 34 to 7. I supported her on cortisol and DHEAS, cleansed her liver properly, added a lot of fat to her diet. Lot of fat. No change in protein, decreased carbs, but added a lot of fat to her diet. And gave her bioidentical progesterone. 6 weeks, she could, so this is all, she had all of this. Her cholesterol became normal. We stopped her statin, which she was on for last 12, 15 years. She now eats in a window of 8 hours and she has no cravings for 16 hours. Means I am not able to do it at times, but she is doing it so beautifully, cross fingers. Every time I see her, her face is glowing. Few other things which we did, I told her, your room should be cool. Completely dark room when you go off to sleep. 2 hours before digital sunset. 10 p.m. go to bed. Magnesium, tryptophan rich foods. No high GI foods in dinner. I added L-theanine, GABA, ashwagandha, magnesium, glycinate and melatonin because she was a very complex case. Breathing practices, I told her deep breathing, box breathing 4-7-8 mein. Yog Nindra. Nighttime, whatever negative thoughts she used to have, got that in place and helped her feel better.